This is about a low-cost landslide monitoring and warning system which we have developed at IIT Mandi. As you know, more than 5,000 people are buried alive and there are more than 4 billion USD in losses every year due to landslide disasters globally. In India, the problem is quite severe. India happens to be the landslide capital of the world, where on average about 1,000 people lose their life every year on account of landslides. The problem with the landslide sensing technologies, existing landslide sensing technologies, is that these technologies are costly. Technologies like conventional geotechnical monitoring, and we tried to solve this problem. The solution is a low-cost landslide monitoring and warning system. This technology, as I have already explained, is low cost. It is 1,000 the cost of a conventional geotechnical monitoring system. Because of this low cost, we can deploy thousands such systems at so many landslide-prone locations across India and the world using this technology. We have already commercialized this technology with a number of agencies, including the Mandi District Administration, the Indian Railways, along the Kalka-Shimla track, and also emerging possibilities with Konkan Railways and Transport for London in London, UK, the London Underground. We hope that this technology provides a promising solution to landslide problem plaguing the society. I am thankful to National Disaster Management Authority for funding this project, which has led to the development of this technology. We are also grateful to other agencies including DTR and DRDO, the Mandi District Administration, Himachal Government, Uttarakhand Government, and other clients who have tried this technology and given it a go-ahead. So, in order to cater the issues of controlling the life loss associated with this disaster, there are a lot of landslide monitoring measures by which the early warning systems are developed and which can be in place. When we looked into the literature, we found that these existing methods are range from macroscopic to microscopic. In macroscopic, we talk about collecting images from satellites, which is remote sensing based, and we collect information from the satellites, and we do algorithms by which we can understand the deformation of the soil or this ground from the satellite images, followed by the micro sensing, where we install proper sensors in the location, and according to the site locations we choose the type of sensors such as piezometers, scintillometers, extensometers, which can be used to monitor the happening of movement in the particular locations. Other than this, we also have methods associated with UAV or GPS methods by which we see what is the relative distance or the relative movement between two fixed points by using GPS methods, and a lot of other methods. And these have been successful over the time, but what we found was majorly the three problems associated with these particular systems. One is the cost of the system, which is very high. Two is the deployment issues. So if suppose I want to install one particular sensor on the top of this, such as piezometer or inclometer, it will be very difficult for carrying up the instruments or equipment associated with the deployment. Number three, when we talk about the real-time monitoring, it's very difficult. It is not real-time monitoring. It doesn't support real-time monitoring. So thereby, it cannot give you timely warnings. Landslides are a very common problem here in the hilly terrain, and there are very few technologies which are available to help the common people. In this regard, my colleagues Dr. Varun Dutt and Dr. Uday Kalla, along with their team of students and staff, have developed a unique technology which can not only monitor the landslide but also do an early warning for the general public. My colleagues Dr. Varun Dutt and Dr. Uday Kalla, they have also come up with a startup which is the first faculty-led startup, which is this INT IoTs, to take this technology forward and commercialize it. And as this landslide monitoring system is very low cost, this could be easily developed, and also this could be deployed at several locations considering its low cost. Currently, more than 10 such devices have been deployed at several locations here in Mandi, especially in the highway which goes from Mandi to Joginder Nagar and also from Mandi to Kullu. So this is a very unique technology.
अभी आप आईआईटी मंडी की लैब में हैं। इस लैब के अंदर हम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी वर्किंग कैसे है ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमने इस लैब में डेवलप किया है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो वेदर मॉनिटरिंग और लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग के काम में आते हैं। जैसा कि इसके अंदर ये वेदर सेंसर लगे हुए हैं जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी और बैरोमेट्रिक प्रेशर्स मेज़र करते हैं। और इसके साथ में ये टिपिंग बकेट रेन गेज लगा हुआ है। जैसे कि ये ऊपर कलेक्टिंग एरिया है, इस कलेक्टिंग एरिया के अंदर हम रेनफॉल कलेक्ट करते हैं और इसको वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट में हम इसको कन्वर्ट करके हम पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी रेनफॉल हुई है इसको हम मेज़र करते हैं। इसके साथ में ये वाली जो लंबी नोट दिखाई दे रही है, इसको हम 1 मीटर अंडर लैंडस्लाइड के अंदर हम इसको दबाते हैं। इसके अंदर बेसिकली सॉइल मॉइस्चर सेंसर, फोर्स सेंसर्स एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स लगा हुआ है। इसकी एक्सेलेरोमीटर सेंसर की मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक्सेलेरोमीटर सेंसर को हम एक फिक्स पोजीशन पे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद में हम इसकी एक्सीलरेशंस की इनिशियल रीडिंग लेते हैं। उसके बाद में जो भी एक्सीलरेशंस को चेंज हुआ हम इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम लैंडस्लाइड में कितनी मूवमेंट हो रही है ये मेज़र कर लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हम इसको एक फिक्स पोजीशन पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स को, और जब भी कभी ये मूवमेंट करता है तो हमें इसकी पोजीशन मिलती है 3D के अंदर, जिससे हम लैंडस्लाइड का मास मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है ये हम मेज़र कर सकते हैं। एक्सेलेरोमीटर सेंसर हल्के से हल्के मूवमेंट को कैप्चर करने में भी सक्षम है। जैसा कि आप इसमें प्लॉट पे देख पा रहे हो, ये अभी स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है, तो इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब भी हल्का मूवमेंट होता है तो ये उसको मेज़र कर लेता है। लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम लैंडस्लाइड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो ये सोलर पावर और बैटरी से कनेक्टेड होता है और साथ ही साथ ये मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और हर 10 मिनट में जो भी सोइल मूवमेंट और वेदर के जो भी डेटा है ये हमारे क्लाउड सर्वर के ऊपर भेजता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्लाउड सर्वर है। हम लैंडस्लाइड लोकेशन की लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल और वहाँ पे मूवमेंट कितना हो रहा है, इसकी लाइव मॉनिटरिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसको लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लैंडस्लाइड के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। जैसा कि हम अभी एक एक्टिव लैंडस्लाइड पे खड़े हुए हैं, हमने हमारा लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। सो हमारा ये लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम अप टू 15 मीटर डेप्थ तक सॉइल मूवमेंट को मेज़र करने में सक्षम है। सो हम यहाँ पे लैंडस्लाइड लोकेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एंड सॉइल रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे क्रैक्स लाइन का हमें पता कर सके कि हमें सिस्टम कहाँ पे डिप्लॉय कर। सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद में हम रोड के दोनों साइड में हूटर एंड ब्लिंकर्स लगाते हैं ताकि हम जब भी यहाँ पे सॉइल मूवमेंट या लैंडस्लाइड होने की संभावना हो ताकि हम ट्रैफिक को रोक सकें। अभी मैं लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अभी हमने यहाँ पर एक वार्निंग पोल इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें हूटर और ब्लिंकर लगे हुए हैं और एक चेतावनी बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि आम लोगों को समझ में आ जाए कि जब भी लैंडस्लाइड होगा तो यहाँ पे हूटर और ब्लिंकर ऑन हो जाएंगे। अभी हमने जो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम ऊपर इंस्टॉल किया है वो इस वार्निंग पोल से वायरलेसली कनेक्टेड है और हम अभी आपको एक आर्टिफिशियली वार्निंग जनरेट करके दिखाते हैं। रिसर्च में हमने कुछ एल्गोरिदम डेवलप किए हैं जो कि मशीन लर्निंग की हेल्प से अलर्ट जनरेट करती है। तो ये एल्गोरिदम 3 लेवल के अलर्ट जनरेट करती है। अलर्ट्स 3 लेवल के हैं, लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हाई लेवल। इन तीनों में किसी भी लेवल की अगर मूवमेंट होती है तो हमें एक SMS जाता है। वो SMS हमें मोबाइल पे शो होगा जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर लोकेशन का लिंक भी दिया होगा। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करके हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो ये सेम मैसेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तक जाता है, तो इसमें पर्टिकुलर लोकेशन मैप पे मार्क हो जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वहाँ पे जाके अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकती है। Jai Hind. Almost 12.5% of India's surface is prone to landslides. Much of this, of course, lies in the northern region in the Himalayas. But surprisingly, also a lot of it in central India and in southern India, in places like Kerala,
where some very serious landslides have occurred in the past. Based upon this, it is incumbent on us in the National Disaster Management Authority to do extensive research and find ways of early warning to mitigate the possibility of mass casualties in occurrences of landslides anywhere in the country. And therefore, based on this, the mitigation division of the NDMA has been pursuing some research on this and carrying out certain measures to ensure the creation of the means for early warning. So it's on the 4th of December 2017 that the NDMA initiated a pilot project on development and evaluation of low-cost landslide monitoring solutions in collaboration with the IIT Mandi. The NDMA appreciates the collaborative efforts of the Indian Institute of Remote Sensing of the ISRO and the Defense Terrain Research Laboratory of the DRDO in providing their technical inputs through resistivity and ground penetrating radar surveys. These surveys helped the selection of site for installation of sensors and development of landslide instruments during the implementation of the project. In the project, some of the activities which were undertaken: a prototype low-cost MEMS-based landslide monitoring system was developed. Lab-scale simulations on the landslide monitoring system was performed. The site selection with subsurface deployment of the LMS was completed at the Gharpa hill site in the command village along the road connecting Mandi to Bajora in the Kulu area via Katola in Himachal Pradesh. Thresholds for early warning were developed based on data collected on cloud and Internet of Things. Machine learning algorithms for monitoring of landslide and early warnings were developed. Now, as far as the benefit to the nation is concerned, the low-cost landslide monitoring and early warning sensors and instruments were all developed in-house in India, therefore cutting costs to a great extent. As far as the way forward is concerned, the pilot project is successfully completed by IIT Mandi in December 2020, and now the upscaling of developed low-cost landslide monitoring and early warning sensors and instrument for generation of accurate real-time landslide warning is to be done in the near future. एक मेजर इंसिडेंट 2017 में हुआ था कोटरूपी क्षेत्र में, जहां पर कि 46 लोगों की जान एक भूस्खलन के वजह से चली गई थी। इसको देखते हुए हमने आईआईटी मंडी के साथ उनके साथ संपर्क स्थापित किया, जो उन्होंने एक लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार की थी। उसको हमने पायलट के रूप में पहले साल में 5 लोकेशंस पे और इसको सब्सिक्वेंटली बढ़ाकर 10 और 15 लोकेशंस पे हमने इसको स्थापित किया। ये एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन होने के वजह से जिला प्रशासन के लिए ये आसान रहा कि हम अलग अलग स्थानों पर इसको डिप्लॉय कर सके, और इन स्थानों पर जहां पर ये इसको डिप्लॉय किया गया वहां पर जो प्रशासन है उसको भी अलर्ट आता है ताकि हम अपनी फोर्स तैनात है उनको वहां पर मोबिलाइज करें। तो इस मैकेनिज्म के माध्यम से वी गेट एन अर्ली वार्निंग, जिस वार्निंग के माध्यम से वहां पर भूस्खलन होने को जब वो हो रहा है तब हम लोगों को वहां से हटा दें, ट्रैफिक रोक दें, ताकि भूस्खलन जब अगर होता है तो कोई जान का नुकसान ना हो। आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये इनिशिएटिव हमने धरातल पे इम्प्लीमेंट किया और इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। Every year there is so much loss of life and property in the Himalayan region because of landslides. I am very happy that IIT Mandi team has come forward to create a solution by which we could get a warning in advance for potential landslides. This is a system that can be deployed at landslide prone areas, and the system can do real-time monitoring. For this achievement, I would like to congratulate especially Professor Varun Dutt and Professor K.C. Uday of IIT Mandi, who have spent a lot of time in coming up with this very innovative idea. And I would also like to place on record our sincere appreciation for the National Disaster Management Authority, which has sponsored this project
and which is taking keen interest in deploying this product in the field. The more it is deployed in the field, the more lives and property we can save.